हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू चैनल साहिल दंदेलिया रिएक्शन चैनल पे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है जिस पे मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियो होने वाला है हमारे लिए। ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, मुनीबा मजारी की वीडियो होने वाली है, जो काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है एंड काफ़ी इंस्पायरिंग वुमेन है फॉर एवरीबडी। पाकिस्तानी गर्ल है जो मैंने इनको काफ़ी टाइम से दोस्तों, इनकी आज से 2 या 3 ईयर एगो मैं इनकी वीडियो देखी है। काफ़ी अच्छी स्पीच देती है दोस्तों, बिकॉज सी नो कि हाउ टू सर्वाइव, मतलब कैसे खड़ा होना है गिर के भी। सो एक काफ़ी अच्छी दोस्तों ये इंस्पिरेशन है। और एक इन्होंने सॉन्ग भी गाया था, ये वतन हमारा है, मैंने उस पर भी रिएक्ट किया था, जो पाकिस्तान का आप कह सकते हैं नेशनल सॉन्ग है। सो काफ़ी दोस्तों इंस्पायरिंग है। सो एक स्पीच है इनकी, ये भी अपनी स्टोरी बताएंगे। सो आप चलिए दोस्तों देखते हैं। और मैं आशा करूंगा कि दोस्तों आप, आई होप कि आप दोस्तों पूरी वीडियो देखेंगे। सो पूरी देखिएगा दोस्तों, आपकी कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ मोटिवेशनल आएगी आपके अंदर और हमारे अंदर। सो दोस्तों पूरी वीडियो देखना बिल्कुल मत छोड़ना, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो या कॉमेडी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit.
There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. That's true. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard, there will be turmoil, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. That's strong. Start clapping बनती है इनके लिए. So जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ और मैं काफी टाइम से जानता हूँ कि she is a very strong woman and she inspired a lot of people of in the Pakistan and all over world because इनके पास्ट में जो हुआ she spoiled from मतलब इतनी मेजर इंजरी मतलब काफी इंजरी और मतलब एक तरह से पूरा इनका डिस्ट्रॉय हो गया था दोस्तों. और फिर भी गिव अप ना करना. 2 ईयर का बेड रेस्ट, आपकी मतलब पैरालाइज हो गए, आपके लेग काम नहीं कर सकते, फिर भी मतलब और कोई हो तो गिव अप कर दे. बट शी डिडंट. उन्होंने एक पैशन अपने अंदर क्रिएट किया मतलब और सबको इंस्पायर किया यार. और एक वुमेन होके मतलब और जो बंदा था हाउ कैन डू दैट मतलब एक कार एक्सीडेंट जब होने वाला वो कूद गया और उसको अकेला छोड़ दिया मतलब फिर भी सी प्रे फॉर हिम. एंड और आफ्टर डिवोर्स
उसने मतलब शादी भी की थी। और मतलब एक बंदे के लिए यार आप सोच नहीं सकते कि कितनी सारी डिफिकल्टीज होती है। हम एक आपस में दोस्तों एक बात कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, बट जिसपे आती है जो फेस करता है, काफी इट्स टू डिफिकल्ट टू फेस देम एंड फ्रंट ऑफ द पीपल। और काफी इंस्पायरिंग है दोस्तों। और फिर उन्होंने, आप जानते हैं कि एंकर काफी मतलब सोसाइटी सोशल वर्क भी कर रही है, एनजीओ भी रन करती है ये। और जब मैं देख रहा था ना दोस्तों, तो एक मेरे अंदर भी मैं इन्वॉल्व हो गया था इनकी बातों के अंदर, जो एक अंदर से एक्सपो होती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों। बिकॉज जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना सब होने के बाद, और काफी ज्यादा इंस्पायर करती है दोस्तों यार। जब वो बोल रही थी, एक आवाज में दर्द था, मतलब इतना होने के बाद। और मैंने काफी सुना है दोस्तों इनकी, एक इमोशनल स्पीच भी सुनी है, इसमें रोई है ये, काफी मैंने स्पीचेस देखी है इनकी। और पर्सनली एक काफी इंस्पायरिंग वुमेन है यार। हर एक उस वुमेन के लिए जो की मतलब एक बचपन में शादी हो जाना, फिर भी मतलब वो ना मिल रहा यार, और लाइफ में फिर उसके बाद इतना सब होने के बाद ये अचीवमेंट पाना, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट कैन हैपन व्हेन यू डिसाइड द गोल। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस, और मेरे लिए भी, आप सभी के लिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। काफी कुछ एक सबक मिला, मतलब कुछ भी मतलब हारना नहीं है, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप में बिलीव करो, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो काफी अच्छी चीज है दोस्तों, आई होप आपको समझ आई होगी। और इसी के लिए दोस्तों लाइक जरूर करें, और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज एक एजुकेशन वीडियो है, एक मोटिवेशन वीडियो है, जिससे कि आप दोस्तों की किसी की भी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, कुछ मोटिवेट हो सकता है वो बंदा या बंदी, कोई भी एनीथिंग। जरूर शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं मुझे कि आपके अंदर मतलब क्या फील किया आपने। आई होप कि आपको अच्छी लगी। और दोस्तों अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, अनेक तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस। तो जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको अपडेट उसी से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।